So today, leverages chapter. Yesterday we had done, the basic of financial management, and we started with our first chapter, leverages. Just we will revise our leverages because it is a formula based chapter. Okay, so we have to be very thorough with our formulas, so we don't waste time during solving our MCQs. Okay, at the time of exam. तो थोड़ा कर लेते हैं. पहले तो leverages क्या है? It is a leverage is basically what? It shows a relationship, right? A relationship between sales and profit. यही किया था हमने. Also it shows the speed at which profit increases, okay, due to increase in sales. Not necessary always the percentage increase in sales will be the same percentage increase in profit. It can be proportionate, it can be improportionate, it can be different. Okay, so whenever sales increases, say by 10%, and if the profit increases by 20%, we will say that yes, the profit changes by 2 times when there is a change in sales. Correct? Then we were speaking about 3 types of leverages. Why does this leverages arise? Because of the fixed cost involved in a given company. Okay. Now those fixed costs were 2 types I told you. Operating fixed cost and financial fixed cost. Operating fixed cost की वजह से अपना operating leverage आता है. ठीक है, तो degree of operating leverage which we did was between contribution and NPBIT. Degree of financial leverage, interest comes between NPBIT and NPBT. And degree of combined leverage, which is nothing but a product of degree of operating leverage and degree of financial leverage. ठीक है, तो ये हमें याद होना ही चाहिए by heart, degree of financial leverage. Now moving a little bit further, just to understand the relationship a little better, let's do this. Okay, हम अपना income statement बना ले. इनकम स्टेटमेंट है ना, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दैट विल गिव मी माय कंट्रीब्यूशन, माइनस माय फिक्स्ड कॉस्ट, दैट विल गिव मी माय NPBIT. Once I subtract my interest, I'll get my net profit before tax. ठीक है ना, right? So when I was talking about degree of operating leverage, okay, so when I'm talking about operating leverage, I'm talking about the operating fixed cost. Thus degree of operating leverage, since it comes between contribution and NPBIT, okay, contribution and NPBIT, therefore contribution upon NPBIT will give me my degree of operating leverage. Degree of financial leverage, since degree of financial leverage, interest, we are talking about the financial cost. It comes between NPBIT and NPBT. So NPBIT upon NPBT. Therefore, degree of combined leverage, it is coming between contribution, both the fixed cost. I am talking about the fixed cost operating as well as financial fixed cost. Thus degree of the combined leverage is contribution upon NPBT. We arrived at this formula. This contribution upon NPBT is nothing but degree of operating leverage into degree of financial leverage. Am I clear so far? ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें पूछूं, tell me the relationship between sales and NPBIT, which leverage will you use to show me the relationship?
If I ask you to show me the relationship between sales and NPBIT, which leverage will we use? Perfect. Why? Because NPBIT के पहले एक ही फिक्स कॉस्ट आया अपना, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, राइट ना? So I will show my operating leverage. If I am telling you, show me the relationship between NPBIT and NPBT, then degree of financial leverage. And if I tell you, show me the relationship between sales and NPBT, तो क्या बोलेंगे हम? या तो कंट्रीब्यूशन और एनपीबीटी की में अगर रिलेशनशिप बताना है तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज. ओके, दिस वी आर सपोज टू नो इट बाय हार्ट. व्हाई? बिकॉज नाउ टाइप 2 सम्स व्हेन आई विल स्टार्ट टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट वी आर सपोज टू यूज दिस फॉर्मूलाज. ठीक है, यहाँ तक इजी सिंपल था. ओके, अभी रिविजन के लिए फोर्थ सम अपना कर ले. क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 आई हैड एक्चुअली गिवन 3 and 4 फॉर होमवर्क. आई एम श्योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑल मस्ट बी एबल टू, यू ऑल मस्ट हैव डन इट. वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4, तो और थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ABC लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक ऑफ ₹5 lakhs, ₹100 फेस वैल्यू and ₹5 lakhs is the 10% debentures of ₹100 each. अभी ये जो 10% होता है वो कुछ नहीं, it is the interest rate on the debentures. Sales have increased from 50,000 units to 60,000 units. The selling price is ₹12 per unit. The variable cost is 8 per unit and the fixed cost is ₹1 lakh. Tax rate they have given me 50%. We are supposed to calculate the percentage increase in EPS. EPS is nothing but earning per share. Earning per share. The degree of financial leverage at both the units, 50,000 as well as 60,000. Degree of operating leverage at both the units, and comment on the behavior of earning per share, operating and financial leverage in relation to increase in sales from 50,000 units to 60,000 units. चलो, क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. We have to do it as per 50,000 units, right? And 60,000 units. Alright. Now 50,000 units पे sales minus variable cost, that will give me my contribution, minus my fixed cost, that will give me my NPBIT, minus interest, that will give me my NPBT. From that, when I will subtract my tax, I will get net profit after tax. Okay, now sales. Okay, at 50,000 units, let me see what is my sale price. Sales has increased and selling price is ₹12. Okay, so at ₹12, 50,000 into 12, 6 lakhs, and 60,000 into 12 will be 7,20,000 rupees. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हमारा दिया हुआ है ₹8 पर यूनिट. ठीक है, एट ₹8. तो एट ₹8 अगर करेंगे तो 4 lakhs, and at 60,000 units it will be 4,80,000. ठीक है, contribution 2 lakhs, and here the contribution will be 2,40,000. Fixed cost is given to me at ₹1 lakh. Fixed cost will change? No. Right? So now my NPBIT here is 1 lakh and here it is 1,40,000. Now interest. Interest किस पे देना होगा मुझे? मेरे डिबेंचर्स पे आएगा इंटरेस्ट. इट इज़ अ डेट. 5 lakhs के ऊपर अगर मैं 10% करूँ तो 50,000.
बराबर है कि नहीं? 50,000 आएगा ना, तो चलो अभी इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर ले। 50,000 ये इंटरेस्ट क्या नेक्स्ट 60,000 यूनिट्स पे चेंज होगा नहीं ना, बिकॉज इंटरेस्ट इज ऑल्सो अ फिक्स कॉस्ट, अ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट. Here it will be 50 and here it will be 90,000. Tax rate they have told me it is at the rate of 50%. So 25,000. Here it will become 45,000. Okay, so my net profit after tax 25 and 45. अभी अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर इज नथिंग बट इट इज द प्रॉफिट अवेलेबल. ओके, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. Profit available for equity shareholders, okay, upon number of shares. Equity shares, no? Yes, equity shares. Profit available for the equity shareholders divided by number of equity shares. That will tell you that this is the earning of the shareholders, of my equity shareholders per share. ठीक है. अभी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कौन सा प्रॉफिट होता है? जब हमने टैक्स भर लिया. ओके, सो आफ्टर टैक्स if there is preference dividend, we have to remove the preference dividend, okay, from that tax amount, from the net profit after tax. But अपने सम में कोई preference dividend नहीं है. Preference shareholders always get a priority in their dividend, so that amount has to be removed from my net profit after tax. लेकिन यहाँ पे कोई preference dividend है ही नहीं. फिर भी I am just writing so that when you all revise you all can see कि हाँ preference dividend यहाँ पे था ही नहीं. ठीक है. So now I'll write this formula again down, don't worry, for earning per share. Since there is no preference dividend, this is the amount available for equity. I can say net profit for equity shareholders is 25,000 and 45,000. ठीक है. Therefore, earning per share. What is earning per share formula? Net profit for equity shareholders upon number of equity shares. अपने पास कितने इक्विटी शेयर्स हैं? 5 लाख शेयर्स, रुपीज 5 लाख 100 रुपीज का फेस वैल्यू है. सो हाउ मेनी शेयर्स? 5,000 शेयर्स है ना. तो पहले में क्या आएगा? अर्निंग पर शेयर 25,000 डिवाइड बाय 5,000, सो इट विल बी रुपीज 5 per share, and your 45,000 divided by 5,000 rupees 9 per share. Understood this? ठीक है. So now they are telling us to find degree of operating leverage. Okay, financial leverage also, operating leverage both. Okay, they are telling us that also, and percentage increase in the earning per share. तो पहले ये कर लेते हैं. Percentage increase in earning per share. Percentage increase in earning per share. तो क्या होगा परसेंटेज इंक्रीज? बताओ कितना इंक्रीज हुआ? 4 रुपीज से इंक्रीज हुआ. हमेशा डिफरेंस अपॉन द बेस. 4 upon 5 into 100, so it has increased by 80%. Alright, so percentage increase of earning per share is 80%. ठीक है. Now degree of operating leverage and financial leverage. Okay, degree of operating leverage at 50,000 units. Okay, and degree of financial leverage at 50,000 units. चलो करो. कितना होगा? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी व्हाट? कंट्रीब्यूशन. नो, कंट्रीब्यूशन अपॉन एनपीबीआईटी. हाउ मच इज माय कंट्रीब्यूशन? 2 lakhs. एनपीबीआईटी इज हाउ मच? 1 lakh. So it will come 2 times. 2 times. And degree of financial leverage, it is between NPBIT and NPBT.
So NPBIT is 1 lakh, NPBT is 50,000. So again it will come here 2 times. Okay, so at 50,000 units, degree of operating and financial leverage both is 2 times. See, degree of operating leverage at 60,000 units and degree of financial leverage at 60,000 units. ठीक है. So again, now I will see my 60,000 वाला chart. Contribution upon NPBIT 2,40,000 upon 1,40,000, that will come to 1.71. 1.71 times. And degree of financial leverage, which is again between NPBIT and NPBT. Okay, NPBIT and NPBT. 1,40,000 divided by 90,000, that will come to 1.55 times. Okay. Now they're saying something. Comment on the behavior of earning per share, operating and financial leverage in relation to increase in sales from 50,000 units to 60,000 units. Now what do you say when the sales have increased? Okay. Okay, इस पे कमेंट करना है हमें. वो बोल रहे हैं जब सेल्स इंक्रीज हुआ है तो कमेंट ऑन द फाइनेंशियल लेवरेज एज वेल एज द ऑपरेटिंग लेवरेज. ओके, what do you think, what has happened to both the leverages with the increase in the number of sales units? What has happened to these leverages due to increase in sales? What has happened? I can see on the board, like what has happened when I calculated. Leverages have decreased. Degree of operating leverage as well as degree of financial leverage has decreased with increase in sales. However, if I see the behavior of earning per share has increased with increase in sales. Correct? Understood this? Chalo. Okay. Now we'll start with some different types of sums. Okay. Now this type 2 sums is basically on this relationship only. पहले पढ़ते हैं. Okay. Okay. Using leverage, calculate increase or decrease in the profit. ठीक है. This is the type 2 type sums. Okay. Leverage दिया रहेगा, या तो हम पहले ढूंढेंगे leverage और फिर हमें बताना है कि भाई profit increase हुआ, decrease हुआ, क्या हुआ. Okay. You are required to prepare their income statement. From the following information related to Sunrise Limited, they have given me sales, variable expense, contribution, fixed expense, EBIT, less interest and taxable income. यानी NPBT दे दिया है मुझे यहाँ तक. You are required to submit the following to the management of the company. What percentage will a taxable income increase if the sale increases by 6%? ओके. यूज कंबाइंड लेवरेज. ठीक है. अभी अगर नहीं देते यूज कंबाइंड लेवरेज तो हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं. पहले तो अपना गिवन लिख देते हैं. वील जस्ट राइट आवर इनकम स्टेटमेंट. ओके. अदरवाइज नहीं तो इनकम स्टेटमेंट तो है ही यहाँ पे, तो वी डोंट नीड टू कॉपी इट अगेन. फर्स्ट वील अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. व्हाट परसेंटेज विल टैक्सेबल इनकम, कौन सा इनकम पूछ रहे हैं, ये वाला. दैट मीन्स क्या है ये, NPBT. हाँ, इंक्रीज इफ सेल इंक्रीजेस बाय 6%. ओके, तो इन दोनों में रिलेशनशिप पूछ रहा है.
Question number 5. A1. They are telling me use degree of combined leverage. अगर ये नहीं दिया रहता तो हम कौन सा डिग्री यूज करते थे? अगर नहीं भी दिया रहता तो when I want to combine only, no, when I want to understand relationship between sales and taxable income, I will use combined degree of leverage. Okay, degree of combined leverage I will be using. Okay, to understand the relationship between sales and NPBT. Okay, तो पहले तो combined leverage find कर लेते हैं. Degree of combined leverage will be how much? Contribution upon taxable income 2,60,000 upon 70 करें. Degree of combined leverage क्या है? Degree of operating leverage into degree of financial leverage है. Degree of operating leverage will be equal to contribution upon NPBIT, and degree of financial leverage is NPBIT अपॉन NPBT. तो क्या है? लेवरेजेस अगर अपने पास होंगे तो फटाफट होगा ये. ओके, कॉन्ट्रीब्यूशन इज 2,60,000, NPBIT इज 80. 2,60,000 अपॉन 80,000. हाउ मच इज द लेवरेज? 3.25 करना, 3.25 टाइम्स आना. एंड NPBIT अपॉन NPBT. NPBIT कितना है मेरा? 80,000 ना, अपॉन 70,000. NPBIT is 80,000 अपॉन 70,000. ये कितना आएगा? 80 अपॉन 70 करो. 1.14 times. I'm getting 1.14 times. ठीक है. So degree of combined leverage will be nothing but 3.25 into 1.14. That will be 3.705 times. ठीक है ना? So now they are telling me that find what will be the percentage increase in the taxable income if the sales increases by 6 times. Okay, we are supposed to use the degree of combined leverage. Okay, यानी इसका मतलब क्या है? If sales increases by 6%, how much will NPBT increase? तो पहले यहाँ पे I'll write my leverage, degree of combined leverage and NPBT. सेल्स जितना बढ़ेगा उसके सेल्स बढ़ रहा है 6%. डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज इज 3.705 times. With that, how it will change my NPBT? So how much it will be? 6 into 3.705, 22.23%. है कि नहीं? जितना मेरा सेल्स चेंज होगा उतने टाइम्स मेरा NPBT चेंज होगा. है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा सेल्स 1% चेंज हो रहा है तो 3.705 टाइम्स मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेंज होगा. यहाँ पे दे दिया है सेल्स इज 6% चेंजिंग. सो मल्टीप्लाई दिस विद द डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज. दैट विल गिव मी द परसेंटेज इंक्रीज इन माय टैक्सेबल इनकम. कूल. चले आगे. हाँ, Ma'am, can you explain the last part again? Sales and why did you multiply sales with DCL directly? why did I multiply sales by DCL directly?
You all only told me that sales and NPBT में अगर रिलेशनशिप ढूंढना है तो कौन सा लेवरेज यूज करूंगी मैं? कंबाइंड लेवरेज, है ना. मुझे सेल्स में, मेरे सेल्स और मुझे एनपीबीटी में अगर रिलेशनशिप ढूंढना है तो कौन सा लेवरेज यूज करना पड़ेगा? बिकॉज दोनों फिक्स कॉस्ट आ गए यहाँ पे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी और इंटरेस्ट भी आ गया. तो दोनों के बीच में, सेल्स और टैक्सेबल इनकम के बीच में कौन सा लेवरेज आएगा? कंबाइंड लेवरेज. करेक्ट. दैट इज व्हाई आई विल यूज कंबाइंड लेवरेज. कंबाइंड लेवरेज मैंने ऑलरेडी फाइंड करके रख दिया विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. अभी दिस मीन्स व्हाट? इफ सेल्स increases by 1%, NPBT, my taxable income, will increase by 3.705%. क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ. If sales increases by 1 times, NPBT is increasing by 3.705 times. Now they are saying that sale has increased by 6%. By how much will NPBT increase? Cross multiply. That will give you 22.23%. Clear? ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है. चलो next they are saying what percentage will EBIT increase if there is 10% increase in sales. Okay, now they are asking me the relationship between EBIT and sales. ये तो कौन सा लेवरेज यूज करना चाहिए मुझे? परफेक्ट. ऑपरेटिंग लेवरेज यूज करूंगी. ऑलरेडी मैंने फाइंड कर लिया है मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज 3.25 टाइम्स है. हाँ. सो पार्ट बी, परसेंटेज इंक्रीज इन EBIT if sales increases by 10%. Okay, so the relationship between them is sales, degree of operating leverage and EBIT. If sales increases by 1 times, degree of operating leverage हमने find किया 3.25 times है. So basically when I multiply this, EBIT will increase by 3.25 times. 3.25 percentage करो यहाँ पे percentage. Okay, that means if sales increases by 1%, 3.25 times EBIT will my EBIT will increase. Now sale has increased by 10%, so 10% into 3.25 times, that will give me how much? 32.5% my EBIT will increase. क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना है, वैसे भी तुम कर सकते हो. It will come with the same answer. As far as you have understood the concept, nothing can change your answer like that. Alright. Now next, they are asking what percentage will taxable income increase if EBIT increases by 6%. अभी किसके बीच में रिलेशनशिप पूछा है? EBIT और टैक्सेबल इनकम के बीच में. तो कौन सा लेवरेज यूज करेंगे हम? फाइनेंशियल लेवरेज. बराबर है. कितना इंक्रीज हो रहा है? क्या इंक्रीज हो रहा है? EBIT. ठीक है. सो परसेंटेज इंक्रीज, they want percentage increase in net profit before tax. Taxable income means net profit before tax. If EBIT increases by 10%. ठीक है. So the relationship between EBIT and here will come the financial leverage. If net profit before interest and tax changes by 1%, देन अपना DFL कितना मिला था हमें? 1.14 टाइम्स. माई EBIT will increase. Now since my EBIT is increasing by 10% into 1.14, that will give me the percentage increase in my taxable income. 1.14 into 10, 11.4%. Clear? No, it is 6%. I'm sorry, in the sum. It is 6%. 6 into 1.4 करो. 1.14.
6.84%. सही है. 6.84% the taxable income will increase. All right. Okay. Question number 6. I'm moving to sales. They have given me 30 lakhs and variable cost is 60%. 60% किसका? Variable cost will be 60% of sales. Okay, obviously जितना sales है उतना मेरा variable cost है, proportionate to the sales. Fixed cost is 2 lakhs and interest is given me rupees 6 lakhs. First they are saying calculate degree of operating leverage, financial leverage and combined leverage. By what percentage sales should decrease to get a break even point? At what sales amount EBIT will now be rupees 5.2 lakhs, and what percentage change will take place in EBIT for 10% change in EBT for 10% change in EBIT. ठीक है, पहले जरा इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं अपना. क्वेश्चन नंबर 6, इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट करके सबसे पहले वी विल फाइंड ऑल आर लेवरेजेस. ठीक है ना. चलो, इनकम स्टेटमेंट में सेल्स दिया है 30 lakhs माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट अपना कितना आएगा? 18 lakhs. 60% ना इसका. Therefore here it will be 12 lakhs rupees. 12 lakhs will be my contribution minus fixed cost. Fixed cost they have already given me 2 lakhs rupees. So 10 lakhs will be my net profit before interest and tax. ठीक है, माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट भी उन्होंने दे ही दिया ना मुझे 6 lakhs रुपीज का. तो नाउ इट विल बी 4 lakhs will be my taxable income, net profit before tax. ओके, तो यहाँ पे ही हम लोग पहले डिग्री ऑफ लेवरेजेस फाइंड कर लेते हैं. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आएगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन एनपीबीआईटी 12 lakhs अपॉन 10 lakhs 1.2. Degree of financial leverage will be between EBIT and NPBT 10 upon 4, 2.5 times, and degree of combined leverage will be 2.5 into 1.2, that will give me 3 times. Okay, all my leverages are now in place. Now with the help of leverages I can find the relationship. ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं. Now coming to they are saying by what percentage my sales should decrease to get a break even point. BEP means break even point. अब ये break even point क्या होता है? इस पॉइंट पे इस तरह से तुम्हारा सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट इस तरह से एब्जॉर्ब होता है that you do not have any profit, any loss. Which profit, which loss I am talking about? Net profit before interest and tax. Before interest and tax. Interest is such a factor कि अगर तुमने लोन उठाया है इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा. उन लोगों को कोई मतलब नहीं तुम्हारा प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ. So they are saying that at what percentage of sales your NPBIT will be 0. Okay. But ma'am, for break-even point, you at least need to deduct interest, right? Sorry? For break-even point, you need to be able to pay the interest that is due to your company. Yes, yes. That is correct. यानी NPBIT के बाद में तो आप बोल रहे हो कि NPBT भी उतना ही अपना 0 होना चाहिए. Should be capable of taking up the interest. Okay. Only then your net profit before tax will become 0. Generally ना क्या होता है कि हम NPBIT ही लेते हैं. Why? Because
in that, whenever a company has a loan factor, like we'll see in another sum, there is one sum in which they have this loan amount in which they have to pay interest, but they have achieved their break even at net profit before interest and tax, NPBIT पे, ठीक है. So अभी यहाँ पे NPBT के हिसाब से लेके देखते हैं कि क्या आता है हमें. से दे आर सेइंग कि ये कितना हो जाना चाहिए तुम्हारा 0. At what percentage the sales will decrease, or at what percentage it will be the sales to get a break even point. ठीक है. सो सेल्स लिख देते हैं और अपना NPBT लिख देते हैं. ठीक है. जब अपना सेल्स 30 लाख था तब अपना NPBT कितना आ रहा था, 4 लाख आ रहा था. और NPBT और सेल्स के बीच में मेरा कौन सा लेवरेज है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज 3 टाइम्स, है ना. नाउ आई हैव टू ड्रॉप सेल्स एट व्हाट परसेंटेज, से आई अज्यूम दैट टू बी X, सो दैट आई हैव टू ड्रॉप माय NPBT फुल 100% माइनस, ताकि वो 0 हो जाए. ओके. So sales degree of combined leverage gives me the change in NPBT. Okay. If sales is changing by 1%, 3 times here, so this becomes 3%. Okay. Now I have to change my NPBT by 100%. ओके. ये तो 3 टाइम्स है ही. सो दिस विल बी क्वेश्चन मार्क. सो इट विल बी क्वेश्चन मार्क, यानी x ले लेती हूँ मैं. तो x क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 3, या 1 मिनट, x इंटू 3 विल गिव मी 300. x इंटू 3 विल गिव मी 100. दैट विल बी x will be 100 upon 3, so it will be 33.33%. So the sales should drop by this percentage in order to come at the break even point. Okay. I can do this even with the help of the NPBIT, but here I am taking the combined leverage, therefore I am taking between sales and NPBT. I am absorbing both my fixed costs, my operating as well as my इंटरेस्ट फैक्टर. ये इतना समझा. तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बता दो एक बार. हाँ. ओके. सेल्स एंड NPBT. इफ सेल्स इज चेंजिंग बाय 1, NPBT is changing by 3 times. I have to change my NPBT by 100, so sales will change by X. क्रॉस मल्टीप्लाई. अगर ये तुम्हें इजी लग रहा है तो ये भी कर सकते हो. ओके. 3%. Now next again they are asking me something similar. They are saying at what sales amount EBIT will be rupees 5.2 lakhs. ठीक है. They want at what sales amount EBIT will be equal to 5.2 lakhs. ठीक है. अभी मुझे बताओ, अभी फिलहाल अपना EBIT कितना है? हाँ, अभी अपना EBIT है 10 लाख. सो टेल मी वन थिंग. फ्रॉम 10 lakhs current NPBIT is equal to 10 lakhs. Now what they want NPBIT to be 5,20,000. So how much drop do they want? 4,80,000. हाँ, change, decrease. So how much percentage decrease this will be? 4,80,000
divide by 10 lakhs into 100, 48%, राइट, 48%. तो अभी आ गया अपना पहले जैसा ही. अभी सेल्स और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कौन सा लेवरेज आएगा? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, है ना. हमने ऑलरेडी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फाइंड किया है 1.2 टाइम्स. So if sales is changing by 1%, NPBIT is changing by 1.2%. अभी मुझे मेरा NPBIT डिक्रीज करना है by 48%. So how much will my sales decrease? कितना होगा ये? 1.2x is equal to 48. X will be equal to 48 upon 1.2. That will be 40%. Sales should decrease by 40%. Sales should decrease in order to get what? Net profit before interest and tax for 52 lakh. तुम करके भी देख सकते हो. यू कैन पुट इट इन योर इनकम स्टेटमेंट एंड सी टू गेट. Like उल्टा कैलकुलेशन, we start from sales and go to EBIT. हाँ, वो भी तुम कर सकते हो. यस, दैट ऑल्सो यू कैन डू. हाँ, यू कैन डू इट दैट वे. यू कैन स्टार्ट उल्टा ऑल्सो, वो भी तुम कर सकते हो. या तो फिर जो हमें अभी आया 40% डिक्रीज करो 30 lakhs को, और फिर देखो NPBIT आ रहा है क्या 5,20,000. क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस. ओके, नाउ देयर इज दिस लास्ट पार्ट इन द सम. आई थिंक यस. व्हाट परसेंटेज चेंज विल टेक प्लेस इन EBT फॉर 10% चेंज इन EBIT? ओके, so now this we had already done. See, what will be the percentage change in EBT for 10% change in EBIT? कौन सा लेवरेज आ रहा है? कंबाइंड. हाँ, फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. इट इज बिटवीन NPBIT एंड NPBT. ठीक है. इफ NPBIT इज चेंजिंग बाय 1%, my degree of financial leverage is 2.5 times. NPBT is becoming 2.5%. Now my NPBIT is changing by 10%. So by how much will my NPBT change? So cross multiply. तो directly यहाँ पे multiplication ही कर दो. क्या आएगा? X will be equal to 2.5 into 10, 25%. So NPBT will change by 25%. है ना. डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो गया. 10 into 25. क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी. ऑलराइट, कूल. So even our type 2 is, type 2 sums with the relationship is over. Okay, I will just I'll take you all through the next sum. Okay, which is again similar, same 6 sum के जैसा ही है. Sales is given ₹20 lakhs. Question number 7. Variable expenses is 50% and fixed cost is 2 lakhs, interest is 4 lakhs. First we have to calculate all the degree of leverages. What would be the sales amount to get EPBT of ₹8 lakhs? What percentage change is required in EBIT to get B break-even point? If EBIT should increase by 2 lakhs, what should be the sales amount? Okay. So this is again using the relationship and you have to solve these sums, okay, based on the formula of all the 3 leverages. Okay. Thank you.